Hello everyone, we are back with our third video for Sports Potatoes, and I'm Aditya as your host. And these three people, three gentlemen, are here with us today to discuss on the next red hot topic, which is wicket keeping options for Indian cricket team for T20 World Cup. एंड अभी पिछले 2 से 3 हफ्तों में ये ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक हो गया है क्योंकि वी हैव लॉट्स ऑफ गुड ऑप्शंस एंड एवरीवन सीम्स टू प्रेफर वन और द अनदर विकेट कीपर बट ओनली वन कैन प्ले इन द स्टार्टिंग 11. So we can start today with Manan. Let me just give you the options which I have. If you have another option, then you can, of course, mention it in your comments. So we have KL Rahul, not so preferred options, and Rishabh Pant. Then we have Sanju Samson, who is in great form, great touch with RR, and doing captaincy as well. So leading from the front. And we have outright options or the outsiders we can call Jitesh, Sharma. Sorry. So yeah, go ahead, man. If you have anything for anyone else, you can mention or we can start. So actually आज एक आर्टिकल पढ़ा था wherein they kept on saying कि भाई it's difficult for newcomers to come into the T20 World Cup squad, but they might leave out some known names as well, right? Wicket keeping का जब हम बात करते हैं तो I feel ऋषभ पंत well, the form that he was in before that unfortunate accident happened to him in 2022, we would not be even discussing whether he should be in the team or not if that was not the case. But because of इंडिया में पब्लिक सेंटिमेंट बहुत ज्यादा चलता है, तो पब्लिक सेंटिमेंट के नाम पे ही उसको टीम में तो ले ही लेंगे. एंड one of the other advantages that Rishabh Pant has is he's a left-handed batsman. बाकी आप तुमने जितने भी नाम लिए या कोई भी और नाम ले लो, चाहे वो राहुल हो या संजू सैमसन या फिर जितेश शर्मा या ध्रुव जुरैल या इवन फॉर दैट मैटर दिनेश कार्तिक, राइट? सब राइट हैंडेड प्लेयर्स हैं एंड आवर टीम इज टू राइट हैंडेड हैवी. मतलब आप टॉप ऑर्डर देखोगे तो अगर गिल खेलने वाला है तो टॉप ऑर्डर में आपके पास जाडेजा जब तक नहीं आएगा बैटिंग करने के लिए तब तक लेफ्ट हैंडर कोई है ही नहीं. सो इन दैट सेंस ऋषभ पंत, देयर इज नो इवन सेकंड थॉट ऑन इट. दूसरा जो ऑप्शन ले जाएंगे, वेदर दैट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर दैट पर्सन कैन एक्चुअली कम इनटू द टीम एज अ प्योर बैट्समैन, राइट? अगर उस फ्रंट पे देखेंगे तो समवन हु इज अहेड इज केएल राहुल, बिकॉज उसको टीम में प्रीवियसली चांसेस मिले हुए हैं एंड अभी गुड बुक्स में रहता है वो बंदा. तो बैकअप कीपर के तौर पे इफ माय चॉइसेस वुड बी, मतलब I would prefer Sanju Samson going, but I would still think the team would take Rishabh Pant and KL Rahul as a backup keeper, because with KL Rahul आपको एक ऑप्शन ये भी है कि he can also open the innings if needed. फिनिशर के तौर पे I would not consider him so highly, but he can bat in the top 3 if needed. अगर जरूरत पड़ी तो वो खेल सकता है. कोई भी ओपनर आपका एक इंजर्ड हो गया, सो विथ केएल राहुल यू कवर 3 बेसिस. एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी मिलता है आपको, एक विकेट कीपर भी मिलता है, एक ओपनर भी मिलता है. So on that front, I think he is the second choice to be the backup wicket keeper for the World Cup, followed by Rishabh Pant. Sanju Samson is in a good form, but unfortunately, he is not going to make the cut. Neither is Jitesh Sharma, Dhruv Jurel, or दिनेश कार्तिक. दिनेश कार्तिक को पता नहीं अभी रोहित शर्मा क्या ही बता दे. वो बोलता रहता है कि भाई हाँ वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं इसको, लेकिन इसका कोई पता नहीं. बट आई डोंट थिंक दे वुड टेक अ बेट ऑन हिम.
So Okay. मेरे हिसाब से ऋषभ पंत purely because he's a left-handed batsman and KL Rahul because he offers you much more than what Sanju Samson or a Dhruv Jurel or any other player would offer. So those are my two picks for the World Cup squad. Okay. Okay. Definitely. Very valid points, I guess, for Rishabh Pant. But again, KL Rahul ahead of Sanju Samson and even DK. That would be like calling out for the hatred against KL. And Yeah, I think he'll be in again in extra pressures. He is always in pressure, so he'll be again in extra pressure if that happens. But yeah, point very well taken. I see, guess we can. उसका एक रीजन ये है because Sanju Samson whenever he's played below number 4 for India, he does not have that good numbers. For Sanju Mhm. Samson to perform, he has to bat in the top 3, top 4. अभी top 3 में दो जगह ऑलरेडी फाइनल है. एक रोहित शर्मा खेलेगा, दूसरा विराट कोहली खेलेगा. There's only one spot open in the top 3. Top 4 में भी I would not say कि Sanju Samson makes the cut in the top 4. If you are to take a left-handed option, there is one person who has gone completely out of the minds of everyone is Ishan Kishan. Correct. He's played well, gives you an opening option and is a wicket keeper again similar to KL Rahul. But I'm not sure Kishan would be preferred over KL Rahul or Rishabh Pant. Okay. Well, very points. So, ठीक है. Good discussions so far. Piyush, would you like to add something or be agreeing with Manan with those two I agree options? with Manan. I mean, Rishabh Pant, I think it's no brainer. वो तो जाएगा ही जाएगा. And what happened today, especially getting a man of the match for captaincy and changing your bowlers, taking 2 catches and stumpings. I have not seen that before. So that means that yeah, उसके लिए hype और buzz create हो रहा है. तो ऋषभ पंत is going for sure. I have not seen this happening if somebody is making a comeback after such an accident and directly they are getting selected for a World Cup. So it's gonna be a rare occasion in itself. But अगर And a risk. जो आईपीएल को लोग इंटरनेशनल मानते ही हैं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो यहाँ पे वो खेल रहा है तो आई बिलीव उधर भी उसको सिलेक्शन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के. सेकंड ऑप्शन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस संजू सैमसन है, बिकॉज ही इज अ फ्लेक्सिबल गाय जस्ट लाइक आवर अदर कॉर्पोरेट क्रिकेटर केएल राहुल. वो संजू ओपन भी करता है, वन डाउन भी आ जाता है. अंटिल लास्ट सीजन he was promoting Dhruv Jurel ahead of him on several occasions. Mhm. And yeah, he was going fourth, fifth spot as well. तो वो कर सकता है. I mean, it's not like कि वो मैनेज नहीं कर पाएगा. तो वो उसमें वो एबिलिटी है. He is in good form. This year he is coming ahead because he wants that spot. He wants to prove himself and he wants that chance. Guy, in spite of being such a good IPL performer, he has not gotten those big opportunities like playing in World Cup. उसको bits and pieces में opportunities मिली है बायलेटरल सीरीज वगैरह में खेलने की, जहां पे उसने उतना अच्छा नहीं करा है. आई एग्री, बट आई स्टिल फील दैट इफ यू वांट टू प्रमोट न्यू गाइज, इफ यू वांट टू गिव समवन अ चांस, देन संजू डिजर्व्स अ चांस जस्ट लाइक रिंकू सिंह एंड शिवम दुबे एज वेल. बट अभी वो ये सिलेक्टर्स कितना एक्सपेरिमेंट मोड में जाते हैं वो उस पर डिपेंड करेगी ये सारी चीजें. आज एक आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था जिसमें वो बोल रहे हैं कि रोहित और कोहली ओपन करेंगे, विच इज गुड. They are thinking about Riyan Parag as well, so he is also in contention. तो अगर रियान पराग को अगर आप ले सकते हो तो आई फील संजू को भी चांस तो बनता ही है. फिर लेट्स सी. केएल राहुल की बात अगर करें तो मेरे देखो यार, उसके लिए इंसान के लिए दो पर्सपेक्टिव है. इफ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें और अगर आपको लगता है कि केएल राहुल को लेना चाहिए, आई नो इस कॉल पे अपन अपने को दे दे ये सिलेक्शन तो कोई भी नहीं सिलेक्ट करेगा. बट अगर कोई सिलेक्टर है और वो सोच रहा है केएल राहुल को सिलेक्ट करने के लिए, तो इधर यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर जॉब और आई फील कि आपको मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है. बंदे ने बंदे ने ये जो प्रूवन परफॉर्मर होते हैं ना, वैसे वो प्रूवन नॉन परफॉर्मर है T20s में. सो आई डोंट थिंक ही शुड बी इन कंटेंशन कॉल. उससे अच्छा तो आप ईशान किशन को ले जाओ वन डाउन. अगर उससे
चलवाने हैं तो वो मारेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस संजू सैमसन एंड ऋषभ पंत, इन दोनों को ले जाओ, वन बैकअप किसी को भी खिला लो प्लेइंग इलेवन में, इट डजंट मैटर, कोई एक खेलेगा कोई एक बैकअप होगा। और अगर वर्स्ट के सिनारियो, अगर आपको इन दोनों में से किसी एक से कलेश है या फिर नहीं अच्छा लग रहा कोई एक, और आपको कोई ले जाना है, तो फिर आप ईशान किशन के बारे में सोच लो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चलाने के लिए। बट इसके अलावा मुझे नहीं लगता ध्रुव जुरैल, जितेश शर्मा और दीनू बाका के बारे में सोचना भी चाहिए सिलेक्टर्स को। Dinu Waka making strong, Doesn't matter. And like I said, turning even if he heads. scores a century in 17 balls, 17 बॉल पे 17 छक्के मार के 102 रन बना दे, I will not take him. Very, very, very strong opinions on KL and DK. But let's go to Anosh. Anosh, what is your thought process about wicket keeping options? Yes, so firstly, Manan mentioned about Pant's form before his unfortunate accident, and I slightly disagree there because the current version of Rishabh Pant, like the two innings which I saw in which he scored 50 plus runs, that is one of the more aggressive batting from Pant that we have seen in IPL. Because since he was made captain, he became a bit slower than what he was. And also, it happens normally also that bowlers have started reading you well, so they start Hmm. bowling to the areas which are your weakness or not your strong zones. So that had happened with him. And I think in ODI setup, he was also dropped for KL Rahul because Correct. KL Rahul was the better batsman. And that Correct. was for ODI. So, okay, so it's T20 right now, so that is not very relevant. But still, in white ball, he was dropped as such before his accident. So now the emotional aspect is always going to like be there, and just they will make a story about it, like how he has made the comeback, and kudos to Yeah. him for that. And even today, he got the man of the match for his wicket keeping and So we made a documentary on it. captaincy, which is very strange, but so yeah, I think he will make it to the squad. And yes, as Manan also mentioned about the left-handed option, so that is there. But there was one like version of Pant which was slightly slower and not that good in T20. He was enjoying the open field settings in Test cricket, where he Correct. had a lot of open areas to hit, but in T20s he was not finding that form, we can say. And apart from that, I think Samson has been given very unfair chances compared to others. Like in ODI, he was again in ODI in white ball cricket, he was doing better than Surya Kumar in before this upcoming before this previous Cricket World Cup. But Surya Kumar was preferred for him because already one keeper, which was also not a pure wicket keeper, KL Rahul, he was selected. So they have shown their bias in that sense. But still, I think right now form is with him. And there is also a scenario where both Rishabh Pant and Samson can get into the team. That is when we Correct. can drop Rinku Singh or Shivam Dube. They are not selected. So they have the lefty option in Pant and another like hard hitting batsman in Samson. Both of them can be selected in that scenario. Now, one point which Piyush mentioned is KL Rahul and about his non-performance. There is a parallel universe where KL Rahul is scoring a 15 ball, 14 ball half century, which he has done in IPL once or twice before. And I think that those kind of innings are stuck in the selector's head. Like he has that capability. So it is not something out of like question for him. So we are not asking like a Cheteshwar Pujara to go out and hit runs at a very fast strike rate. तो बिकॉज कैपेबिलिटी है तभी उससे उम्मीद है कि वो तेज खेले अदरवाइज नो वन वुड इवन आस्क कि मतलब भाई आप मतलब स्ट्राइक रेट बढ़ा लो अपना बिकॉज दैट डज नॉट मेक सेंस इफ द प्लेयर हैज द एबिलिटी ही हैज शोन दैट एबिलिटी सो ऑन राहुल दैट वाज माय पॉइंट नाउ ईशान किशन एंड दिनेश कार्तिक so I'll come to Karthik later but first Ishan Kishan he has a very big advantage like going currently that Yashasvi Jaiswal is not in form. तो ईशान किशन को सिलेक्ट करने से आप दो रोल्स के प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो एक बैकअप ओपनर एंड एक विकेट कीपर एंड अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इन दैट लाइक टॉप ऑर्डर तो काफी स्ट्रॉन्ग
मतलब उसने अभी तक अपना मतलब जो भी क्या बोलते हैं मतलब जो उसने अभी तक फॉर्म बताया है इस सीजन अभी तक काफी अच्छा रहा है। एंड आई एम नॉट हिज बिगेस्ट फैन बिकॉज आई थिंक ही लैक्स द एबिलिटी टू रोटेट स्ट्राइक व्हेन नीडेड। करेक्ट। तो वो या तो मतलब सिर्फ बिग हिट्स मारेगा, बिग हिट्स में भी मतलब सिक्सेस ज्यादा मारता है rather देन फोर्स, मतलब गैप्स वैप्स नहीं निकलते उससे इतने। बट हाँ मतलब अभी फॉर्म में है तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अगेन अभी इमोशन की बात करी थी अपन ने, ईशान किशन ने खुद ने अभी मतलब इतना कंट्रोवर्सी से उठ के आ रहा है, मतलब जहाँ पे वो एकदम गायब हो गया था, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा था। एंड वो यस। फोकस फिर आया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस होना चाहिए, एंड देन ही वाज नॉट देयर। तो वो सारे इश्यूज अभी उसके सॉर्ट नहीं हुए, एंड ऑल्सो इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड सेंट्रली। तो वो सारी चीजें भी हैं, एंड राहुल उस मामले में काफी ऊपर है। एंड राहुल ऑल्सो गिव्स यू दैट ओपनर एंड बैकअप कीपर वाला ऑप्शन, तो अगेन थोड़ा सा मतलब उसके फेवर में। सिलेक्शन की वो डेट वेट को चाहिए क्या मतलब अभी? डू वी नो एनी? And nahi. So the things which I read last time is they are going to select the team by first week of May. So तब तक का buffer time लेके चल रहे हैं. Maybe they are focusing on these people or these players to perform first so that they can make हाँ a good decision. And that is why wicket keeping I think would be you know a challenging position to fill in, because everyone right from Kishan to DK to let's say Samson to the Pant we have, they all are performing very well. If one or two inning comes from KL, it would be a nightmare for selectors, to be very honest. So yeah, let's see. हाँ, that is true, that is true. And also one or you are talking about K, like I think even DK, if he performs in one or two matches, they would have to seriously consider him. I know Correct. that we have talked about previously, like जो पहले जिनको चांसेस मिल चुके हैं उन्होंने नहीं करा है परफॉर्म, बट द थिंग इज दैट ही barely gets to bat when we Exactly. were in Australia in last T20 World Cup. Like we lost that semi-final because top order से ही slow खेले थे, and I think I don't even remember if DK played in that match, और खेला या फेल हो गया ठीक है, क्योंकि इतने टूर्नामेंट में एक दो ही मौके मिलते हैं। एंड ठीक है मतलब नहीं करा उसने परफॉर्म, बट अब अगर वो यहाँ पे कर रहा है परफॉर्म, और वो जिस नंबर पे परफॉर्म कर रहा है वहां पे अपन ऑलरेडी मतलब देख रहे हैं कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल गोइंग ऑन फॉर अस। एज इन स्ट्रगल तो नहीं होना चाहिए, मतलब रिंकू शिवम दुबे दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में है जो होने चाहिए लाइनअप में, बट Correct. अनफॉर्चुनेटली दोनों या दोनों में से एक भी नहीं सिलेक्ट होगा, एंड हार्दिक एंड जडेजा वुड मेक कवर दैट स्पॉट। तो अगर उस केस में फिर मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि हार्दिक को थोड़ा एक प्लेस ऊपर शिफ्ट कर दिया, डीके को हार्दिक और जडेजा के बीच में कहीं पे फिट करा, मतलब जहाँ पे वो आके भी, या फिर उसको सिर्फ जैसे आरसीबी यूज करते हुए चाहे रियली लाइक, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे मैस अप की मतलब उसको भेजते ही नहीं है बैटिंग पे, कि they have given him that role and they stick to that role. So they don't want him to bat before 12 or 13 overs at मतलब ever. तो वो कोलैप्स भी हो जाएंगे तो वो किसी बॉलर को भेज देंगे, या मतलब पार्ट टाइम ऑलराउंडर ऐसा कोई जो प्लेयर है उसको भेज देंगे कि भाई आप जाके बॉल्स खेलो इतने कि आखिरी में आके कार्तिक इतनी बॉल्स में से कुछ करेगा। Correct. तो दैट इज अ वेरी गुड वे टू यूज हिम। एंड हाँ मतलब अभी अगर टाइम है सिलेक्शन होने में और एक दो मैचेस उसके और अच्छे चले गए तो ही कैन गेट इनटू द स्क्वाड आई थिंक। बिकॉज सी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रोहित शर्मा, लाइक नॉट रोहित शर्मा बट इन जनरल कैप्टन से बहुत होता है सिलेक्शन में, एंड Yes. रोहित शर्मा एंड डीके आर वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम देयर मुंबई इंडियंस डेज और इवन previous to that. So that is also there, so we cannot even deny that bias. Correct. Correct. Well, And bias is there. just an interesting thing, guys. I was just looking at these guys and their numbers, right? मतलब we are to look at कि हम लोग जो विकेट कीपर लेके जा रहे हैं वो पर्सपेक्टिव कौन से पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एंड आर वी लुकिंग एट हिम एज अ प्योर विकेट कीपर कि भाई हाँ ये बंदा सिर्फ विकेट कीपिंग करेगा, फिनिशिंग करेगा, या मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, राइट? सो अभी देख रहा था तो अगर आप देखोगे सब जितने भी लोगों की हमने बात की, राइट, बी इट ऋषभ पंत, संजू सैमसन और राहुल, और इन सबका करियर स्ट्राइक रेट सेम है ऑलमोस्ट, मतलब दो तीन का फर्क है, एवरेज में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं है।
करियर स्ट्राइक रेट और एवरेज में कोई फर्क नहीं है, इवन व्हेन द फैक्ट दैट दे ऑल बैट एट डिफरेंट पोजीशंस। मतलब ईशान किशन को आप लोग देखोगे तो वो नॉर्मल ओपन ही करता रहता है। ऋषभ पंत कम्स इन एट 4 मे बी 5। केएल राहुल ऑल्सो हैज ओपन फॉर ऑलमोस्ट मेजोरिटी पार्ट ऑफ हिज T20 करियर, राइट? तो इस विकेट कीपर को जो लेके जा रहा है उसका पर्पस क्या है? सिर्फ विकेट कीपिंग? On pure wicket keeping skills, I would still pick up Rishabh Pant and Sanju Samson. And if there is another option available, I would still pick Dinesh Karthik, because and on any given day, Dinesh Karthik is a far better wicket keeper than KL Rahul will ever be. Correct. Agree. Right. तो उस पर्सपेक्टिव से देख रहे तो स्ट्राइक रेट में कोई फर्क नहीं है। दे ऑल प्ले एट द सेम स्ट्राइक रेट। 130 140 के बीच में ही सब खेलते हैं। इनफैक्ट ऑन 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 द स्ट्राइक रेट फ्रंट, दिनेश कार्तिक बीट्स ऑल दीज गाइज। ये सब 140 के ऊपर कोई नहीं जा रहा, वो 146 148 पे खेल रहा है। सो And अगर आप and बोल रहे हो कि भाई हमारा विकेट कीपर नीचे आके बैटिंग करेगा, तो आई वुड स्टिल पिक दिनेश कार्तिक ऑन, प्योरली ऑन दोज नंबर्स। agree. I think he gives us the finisher options. If we are playing first and he has to bat on number 7 or number 6, then we can rely on him that he can score biggies at the end of the inning. And if we are chasing, also he gives us that depth in the batting lineup, where he can again come in handy with quick knocks like 20 balls, 40 runs, 50 runs, or बट 200, द 200 plus प्रॉब्लम strike वी rate. हैव इज, हमारे पास इंग्लैंड जैसी लग्जरी नहीं है कि हम 11 में 4 विकेट कीपर खिला ले। Hmm. वो अपने पास लग्जरी नहीं है, वो इंग्लैंड कर सकते हैं। बटलर को भी खिलाते हैं, बेस्टो भी खिलाते हैं, फिर वो क्या है, एक और दो दो लोग और हैं, उन सबको खिला लेते हैं एक साथ एक ही टीम में, T20 में। सो वो लग्जरी अपने पास नहीं है, बिकॉज नन ऑफ दीज गाइज आर suitable enough to play on different roles. अब ऋषभ पंत का हमें पता है कि वो 4-5 पे ही बैटिंग करेगा। दिनेश कार्तिक को अगर आप खिलाओगे तो आप 4-5 के बाद ही बैटिंग कराओगे। केएल राहुल को Agree. आपको ओपन ही कराना पड़ेगा। ईशान किशन को भी ओपन ही कराना पड़ेगा। संजू सैमसन इज गुड इफ ही इज इन द टॉप 3। उसके नीचे उसका एवरेज बहुत कम है, मतलब 10-12 का एवरेज है, इफ ही कम्स डाउन बिलो 4। स्ट्राइक रेट भी उतना कुछ अच्छा नहीं है, सो डज नॉट मेक सेंस फॉर हिम टू बैट लो एनी लोअर इफ ही इज इन द टीम। उसको टॉप 3 में ही Correct. खिलाना है। सो दैट्स Yeah. द प्रॉब्लम वी हैव। Anosh, you अनुज, are यू आर on ऑन mute. म्यूट। सैमसन का आई वाज सेइंग कि सैमसन के साथ लाइक वन थिंग हैज हैपेंड दैट in the recent series versus Afghanistan, Jitesh Sharma was preferred over him. And previously also we have seen he was in the squad or sidelined or not given enough opportunities. In this Afghanistan series, I think 5 matches की series he played 2 matches where one on one occasion he was not like required to bat. I think मतलब openers या 3 नंबर तक में मतलब काम हो गया था ऐसा कुछ था, and he failed in one of those. तो 2 मैचेस उसको 3 मैचेस उसको ऐसे तो काम नहीं चल सकता है। एंड अब सीधा वर्ल्ड कप में खिलाना भी काफी रिस्की हो जाएगा। And this is like, despite me being a Rajasthan Royals supporter, I am saying that because I have seen him bat very well in IPL and in ODI cricket also, but T20 में वो नहीं दिखा है form. Hmm. And Pant, अब हाँ, now the topic for debate is that whether you go with the same guys who have already been there and not like taken us over the line, or you want to give opportunities to some new players. Correct. And so far, the pattern is that they are going with the players who have already been there, tried and tested. तो एक दो स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर दिस न्यू पर्सन ट्राइंग समथिंग न्यू वाला चीज चल सकता है, which I feel is like in my head, in my lineup, which is like Rohit, Kohli and Surya Kumar, not necessarily Surya Kumar at 3, but ये 3 बैट्समैन and 2 ऑलराउंडर्स are fixed. So there are only 2 spots left in terms of batting, which you can experiment with. So in both the occasions, Karthik does not make my 11, even if let's say he was selected, because
you are not going to bat Hardik Pandya at 5. So I don't Correct. think that is going to happen. So 3 and 5 या अगर सूर्य कुमार is 3 तो 4 या 5 वाले spots बचते हैं. And for that reason itself, Samson and Pant are the only two options which I think they will be considering. Because we have also heard today that Gill is in contention to make the squad, which means there is already a backup opener. So again, ईशान Agree. किशन का थोड़ा सा मतलब उसमें वो लाइट हो जाता है, मतलब कि सैमसन और पंत हैं, राहुल है, एंड देन गिल एज ओपनर का बैकअप है, तो ईशान किशन के लिए स्पॉट दिख नहीं रहा है मतलब अभी. Do you select Gill and not play him in the 11? That's what they are हाँ trying to. That's what they are हाँ, I trying to. think I think that will happen because he is still very young, and from next World Cup, be it any World Cup, he is a definite in the team. Or like definite मतलब based on current form, and हाँ if he मतलब continues to develop the way he is growing, so he will be there in those teams in future, and probably will be the captain also. okay. So there is that कि मतलब Interesting. आगे आगे तो खेलना ही है उसने अभी, तो अभी उसको we can like take that option कि मतलब उसको बेंच पे रखते हैं. And he doesn't feel like someone who will cause some irritation from bench कि मतलब मेरे को नहीं खिला रहे या उस Eh, बारे में वो बोलेगा या कुछ कंप्लेन करेगा, मतलब he does not seem true. that kind of person. Correct. और Correct. ऐसे लोग बेंच पे काफी मतलब काम आते हैं, मतलब we had धवन, यूजी, like all of these are very positive characters to carry around regardless of whatever we think about their performances. वो मतलब एक chill attitude, सबको हंसाएंगे, एंटरटेन करेंगे, मतलब तो those kind of people are also necessary when they are going on an away trip. तो वो भी काफी मतलब I don't think वो selectors इतना सोचते हैं उस बारे में, but I think that like is a very important factor in some of these selections. Perfectly put. I guess we are done with the discussion, and there are some good topics covered, like for the range of keepers we have. Like we had good backup plans in terms of wicket keepers. Then these keepers are good backup plans as a opener, as a finisher, and good chances. Only one or two are going to USA and West Indies, right? Eh, they're not going So to take more than 2 wicket keepers in the squad. I know. 15 players, two wicket keepers, who can cover And bases that for too, pure. so one wicket keeper apart from Rishabh Pant. So there's only going to be one place available. Correct. And that again has to be a batsman. So that's why we all had these inclination towards KL Rahul because usko preferential treatment mila hua hai abhi tak. That will continue. Okay. And let's throw in someone who is very unknown to these kind of discussions or in contention and outside of the box kind of player. I know his chances are very rare, like 1% out of 100. So let me throw his name, Jitesh Sharma. I need one line from all of you before we wrap up things today. So let's go, Anosh, Jitesh Sharma. Yes, so based on his last season's IPL performance, he was selected for the squad. And recently in the last series, he was the member of our squad. I think at that time, KL Rahul was injured and Rishabh Pant was not even a option at that time. And Jitesh and Samson were selected as a designated two keepers. And because he was selected, so I thought that he would do well in this current season, and then he would be like continued because they don't like as much as we joke about it, no Changes. one likes to make more changes. But now what has happened is Pant's return and Jitesh's poor form has come together. So that is very unfortunate for him because I still feel he is very talented, and जो भी अभी टाइम बचा है मतलब जब तक सिलेक्शन होगा एज वी डिस्कस अभी नेक्स्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ मई में, तब तक भी लाइक कल ही मैच है उनका मुंबई से, एंड आई डोंट थिंक देयर इज अ वेरी लाइक इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगा रोहित शर्मा के सामने. यू गो आउट देयर, स्कोर लाइक
बहुत बड़ा स्कोर तो वो जिस नंबर पे आता करना पॉसिबल नहीं है, बट अ वेरी क्विक फायर 50 या ऐसा कुछ स्कोर, इम्पैक्टफुल इनिंग्स कुछ करे। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज कि वो अभी मार रहा है रन, इतने ज्यादा रन नहीं कर रहा है, बट ही इज ट्राइंग लाइक इंटेंट, फुल ऑन इंटेंट है, बट वो Correct. लग ही नहीं रहे। तो वो भी मतलब उसका भी कोई सेंस नहीं है ना फिर, मतलब ना आप सिलेक्ट होगे ना आपकी टीम का उससे भला होगा, दोनों ही चीजें नहीं हो रही है। तो थोड़ा बहुत वो चीज है, मतलब आई होप कि गिव्स देम दैट हेडेक, बिकॉज अभी तो मतलब क्या है, पंत बहुत इजी सिलेक्शन हो गया ना, तो थोड़ा Correct. ऐसा इंटरेस्टिंग होना चाहिए मतलब। Watch the world burn. If you Anosh. see with we have had no wicketkeeper discussions, normally Indian cricket team mein since Correct. 2004-5 there has hardly been a wicketkeeper discussion. मतलब आप विकेट कीपर हो तो आप सिर्फ बैकअप हो, दैट हैड बीन द केस सिंस 2004। उसके पहले तो वो म्यूजिकल चेयर खेलते थे, वो कितने लोगों ने विकेट कीपिंग कर ली होगी पता नहीं। अजय रातरान, साबा करीम, विजय दहिया, नयन मोंगिया, कौन कौन खेल रहा था यार, द्रविड़। राइट। सो बेसिकली वो I still think that will continue for a decent amount of time until unless Rishabh Pant is fit or has a horrendous slump in form. There is not going to be any discussion on ये बंदा विकेट कीपिंग के बेसिस पे टीम में आएगा, until unless ऋषभ पंत इज देयर। Okay. हाँ, उसको रेस्ट कराने के लिए बिठा दे, किसी को खिला दे तो बात अलग है, लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट में आई डोंट थिंक द टीम मैनेजमेंट इज गोइंग टू टेक एनी रिस्क। Okay. And since we all have discussed about the possibility of DK and taking his name, why not bring Mr. MS Dhoni for one last chance? He gives you the captaincy option. He gives you the wicket keeping options. Number 6, 7 batsman who can hit quick 30 in 10 Uh, balls. Just give me one liner, guys. Only 3 minutes left. One liner. If you have to pick another keeper, considering we are taking two keepers in the squad, one is Rishabh Pant. Do you take MS Dhoni as the backup option? Piyush, yes or no? if I could, if he's coming back for from retirement, then absolutely yes. But I know that's not gonna happen. So yeah, my answer. Okay, He's not Anosh. like those players who actually came back from retirement, like Mohammad Amir, Shahid Afridi. The guy, dude, has some respect. If he says he wants to play, he walks into that team। ऋषभ पंत को भी साइड में रख दो। Yeah, yeah. If he comes back, he'll not be a second choice. Yeah, there is And no then point probably taking him। हाँ, Rohit उसको टीम Sharma में will also सिलेक्ट not करके go for a खिलाना toss. is Yeah, there will be someone else who will be doing post-match presentations and all those things. I don't think that if he unretires तो उसको सिलेक्ट करना चाहिए, because again if you go by the formula कि मतलब tried and tested है, and we still haven't won। मतलब 2007 को भी काफी 17 साल हो गए ना अब तो, मतलब उसके बीच में तो पूरे टाइम धोनी ही था। मतलब आई थिंक कोहली को सिर्फ एक वर्ल्ड कप मिला था एज कैप्टन, बाकी तो एज कैप्टन धोनी ही था। तो आई थिंक दो थे कोहली के, बट हाँ एनीवे पॉइंट बिंग की आई डोंट थिंक मतलब ऐसा होना चाहिए, बिकॉज अगेन हाँ मतलब वो रिस्पेक्ट की भी बात है, मतलब ऑब्वियसली, एंड ही नोज कि मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है उसने। वो वापस तो आएगा नहीं, वो मतलब हाँ, पॉइंट। देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग। या Yeah. Okay, fair enough, fair enough. I guess this is the only video where we had talked about 7 or 8 options for a one position, right? So that's a good topic to discuss, and we had some good discussions today. To everyone who is watching this video, I'll just say that please like, share, and subscribe to our channels for these takes and for this nice discussion over Indian cricket team. We'll venture out and discuss about other teams as and when the squads are finalized for T20. But for now, wrapping up with our team selection for Team India for this World Cup. Yeah. Thank you everyone. Anosh, thank you Manan, thank you Piyush for joining today's meeting. I guess we are done. So thank you. Thanks, guys. guys